One, as we learned in previous class about principle of NMR spectroscopy, then after we learn about instrumentation of NMR spectroscopy, then after in this class we will look towards what is mean by simply nuclear resonance, then after saturation, and then after we look towards the number of signals. How can you calculate the number of signals? Then after, what is mean by chemical shift? What is mean by shielding, de-shielding? Then the factors affecting on chemical shift. Then after, next point is about simply the intense to n plus to n plus 1 rule as well as n plus 1 rule. Now, all these things we want to learn in detail, but before that, first of all, you must have to know one thing, and that one is related with nuclear resonance. That one is related with nuclear resonance. So what is mean by nuclear resonance? Nuclear resonance is the phenomena when you have provided radiation of radio waves onto the your nuclei in which you kept already simply your NMR active nuclei. Now when you applied the frequency, wait a minute, for the explanation of this thing I'm using whiteboard to explain you. As I taught you already this term many number of times, but what is mean by nuclear resonance, that I will tell you here with the help of diagram. So what is that? Simply ये जो कुछ भी हमारा न्यूक्लियस होते हैं, हमारे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस होते हैं, that might be arranged of north and the south pole, and now when it is arranged in your this radioactive in your in the presence of applied magnetic field, this radioactive nuclei is moving. That might be with positive or that might be with negative. What do I mean by this positive and what do I mean by this negative? You may ask me, ma'am, when we are using here magnetic field, why you are writing plus and minus? This plus means nothing but the with the applied magnetic field, and opposite to the applied magnetic field indicates you minus sign, or which is aligning towards the magnetic field is plus and which is opposite to the applied magnetic field is minus. Now this we saw many number of times before today also. So see, when you look towards these your parameters at that time, whatever this nuclei is moving, and when this nuclei is moving and when you are applying some radio waves onto your this nuclei at that time, simply when your applied frequency, what about that applied frequency? ये जो कुछ भी आप रेडियो वेव्स ऐड करते हो, ये रेडियो वेव्स जब भी आप ये रेडियो वेव्स बम्बार्ड करते हो या फिर अप्लाई करते हो आपके न्यूक्लियाई पे, तब क्या होता है कि ये जो कुछ भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आपके इस न्यूक्लियाई के इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से जो वो घूमते रहता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज मूविंग एट दैट टाइम इट इज मूविंग लाइक दिस, एंड व्हेन इट इज मूविंग लाइक दिस when it is moving like this, then as I forwarded you one video on WhatsApp, and that video is telling you info regarding simply the motion of your nuclei, how that motion is. For example, this is your orbit for the motion of your nuclei. Now this is moving first of all, but after some time it is making a cone like this. Wait, it is making a cone like this, or to represent this thing I have
slide, and when this is moving like this, and whatever this moving direction of your nuclei, and when this is moving, this whatever the frequency is there to of about your nuclei to precision, this frequency of your precision, this frequency of your precision, or of your angular frequency of precision, or you can say that frequency as Larmor frequency. Which frequency? Larmor frequency. And whatever this Larmor frequency is there, this frequency is due to the resonance. This why? Because this frequency is there. This frequency arises due to the resonance of your nuclei, which are from low state to the high state. मतलब वो जब radioactive nuclei आपके लो लेवल से हाई लेवल तक जाने तक जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी उसको लगती है, दैट इज व्हाट डू आई मीन बाय दिस, दैट आई विल शो यू बाय यूजिंग डायग्राम. वेट अ मिनट. Yes. See, now this is your nuclei. First of all, it is moving like this. First of all, it is moving like this. And when it is moving towards this axis, then after, when it is moving like this, it is creating, wait, it is creating like this, your orientation. And when it is moving at that time, simply that it is giving rise to the formation of different types of your when you are passing that your radio waves or your electromagnetic waves, they are different types. What do I mean by that? It is means that radioactive waves are of two types, or EMR waves are of two types, polarized and unpolarized. Now, what do you mean by polarized and unpolarized? Polarized means which have their specific direction, but unpolarized means unpolarized जो कुछ भी रेज होते हैं उनकी जो कुछ भी आपकी अनपोलराइज्ड जो वेव्स होते हैं उनको कुछ ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, वो सारे दिशाओं में घूम फिर सकते हैं. बट पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, दीज आर द पोलराइज्ड लाइट विच आर हैविंग स्पेसिफिक देयर direction. Then after, now you may ask me, ma'am, why are you telling all these things to us? Because यही जो polarized light, क्या यही जो पोलराइज्ड लाइट है, यही पोलराइज्ड लाइट जब आपके इस न्यूक्लियस पे गिरती है या फिर हम बम्बार्ड करते हैं, at that time what happens? At that time simply your polarized light is making, or your polarized light is going to form, simply wait, just wait till I'm loading the slide, and then it is having its difference. See, as I told you this thing in my previous classes, what about it is? हाँ, सी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है? आपका जो स्पिनिंग न्यूक्लियई है, उस स्पिनिंग न्यूक्लियई सपोज ऐसे घूम रहा है, घूमते घूमते वो जब भी घूमता है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो घूम रहा है. देन आफ्टर इट इज मेकिंग लाइक दिस, एंड यही मतलब क्या होता है? उस आपके ऑर्बिट का प्रिसीजन, या फिर प्रिसीशनल ऑर्बिट बोलते हैं हम उसको. क्या बोलते हैं? प्रिसीशनल ऑर्बिट. And now, when you have this your in the presence of applied magnetic field, to calculate the orientation, we use the formula to
I plus 1, where I is equals to the spin quantum number of our सॉरी एक्स्ट्रीमली सॉरी रेडिओएक्टिव्ह मी जरी म्हटलं तरी तुम्ही समजून घ्या, मला NMR म्हणायचे. युअर NMR active nuclei. See, when we have this NMR active nuclei, now this state is a ground state and this state is a excited state. For example, आप जब भी ये आपके जो कुछ भी एनर्जी लेवल्स है, इन एनर्जी लेवल्स में जो भी डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं डेल्टा ई. क्या बोलते हैं हम इसे? डेल्टा ई. सो ये जो कुछ भी डिफरेंस है हमारे एनर्जी लेवल्स का, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ई. एंड अब ये जो कुछ भी डेल्टा ई का डिफरेंस है, इस डेल्टा ई के डिफरेंस को जो कुछ जितनी भी फ्रीक्वेंसी लगती है आपके रेडियोएक्टिव इस न्यूक्लियाई को, ये रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई को यहाँ से यहाँ तक जाने में, अब हम ये जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो फ्रीक्वेंसी जब भी इक्वल होती है आपके अप्लाइड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द रेडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी और आपके सोर्स की जो कुछ भी ये फ्रीक्वेंसी, आप मैग्नेटिक फील्ड में जो कुछ भी आपका ये सोर्स है उसको मूव होने के लिए जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी लगती है, मूव होने के लिए मतलब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, मत हो, मैं बताती हूँ. ये डायरेक्शन से उसके अनदर ओरिएंटेशन में जाने के लिए उसको जितनी भी फ्रीक्वेंसी लगेगी उसको हम बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी, या फिर अनदर वर्ड्स में हम उसको बोल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन. एंड इट इज नथिंग बट, मतलब ये जब भी इक्वल होगा तभी हम उस चीज को बोलते हैं न्यूक्लियर रेजोनेंस. व्हाट कैन वी से टू दैट टर्म एज nuclear resonance. So see, in this specific in this specific class, what we learn just now, we learn about simply nuclear resonance. And whatever this nuclear resonance is here, this nuclear resonance is very very important with the point of view your that resonance criteria, or you can say to get your spectra. Why? Because अगर से आपके सारे के सारे न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में होंगे और उनका कुछ एक्साइटेशन ही नहीं होता है, या फिर कुछ आपके न्यूक्लियस है जो कि ग्राउंड स्टेट में ही है, एंड ज्यादा न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट में है और कम न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट में. ये न्यूक्लियर सपोज इधर गया एंड अगर से ऐसे इनके एक्साइटेशन होने के बाद में ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो कुछ भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर से सारे के सारे ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में अगर से इक्वल होते हैं, उसका मेरा बोलने का मतलब है ये सब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से. किससे? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से. तो आप बोलोगे मैम व्हाट इज दिस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? वेट, हाँ, आई विल एक्सप्लेन यू. सो ये जो कुछ भी आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको बताता है कि आपके ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट में जो कुछ भी ये डिफरेंस होता है, ये डेल्टा ई, एंड ये जो डिफरेंस है डेल्टा ई, उसके लिए आपके ये जो कुछ भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और आपकी ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, वो जब भी एक दूसरे के साथ मतलब इक्वल होते हैं, तब उस पोजीशन को, तब उस स्टेट को हम रेजोनेंस बोलते हैं. एंड नाउ ये जो कुछ भी हमारे टू स्टेट्स है, इन टू स्टेट्स में अगर समझ लीजिए ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में अगर से इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो आपको कोई भी, फिर से मैं बोल रही हूँ, तो आपको कोई भी स्पेक्ट्रा नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता. क्यों? क्योंकि जब कभी भी आपको स्पेक्ट्रा मिलता है तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आपके ये जो कुछ भी NMR एक्टिव न्यूक्लियस है, ये NMR एक्टिव न्यूक्लियस शुड go from ground state to the excited state, you can say, और हाइयर एनर्जी लेवल बोलेंगे यहाँ पर. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो वर्ड अच्छा होगा कि हाइयर एनर्जी लेवल में. तो अब ये हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मैंने बोला अभी आपको
बाय यूजिंग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? मैक्सवेल, by using which law? Maxwell Boltzmann distribution law, MBDL, Maxwell Boltzmann distribution law. What is that Maxwell Boltzmann distribution law? Maxwell Boltzmann distribution law is the law which is used for your nuclei, who is where their number of energy levels are there, which is given by Ni upon N0. Ni upon N0 मतलब higher energy level, upon your low energy level or ground level, that is equals to e raised to minus of delta E upon kBT. Now you may ask me, ma'am, what are these criteria or what are these things? Why are you telling all these things to us? Because see, you are learning here physical spectroscopy, not organic spectroscopy. See, chemical shift, shielding, de-shielding, how your spectra should be. All these things you will learn in your MSc second year also. But in this stage or at this stage, it is expected to you guys to learn out all these physical aspect behind NMR spectroscopy, and then after in MSc second year you can know or you can learn out all these things in very detailed manner. Okay, so let me come to the point again. What is this? This is nothing but the equation which is used from Maxwell Boltzmann distribution law. And what for we are using this equation? Because why whatever this your energy levels are there, अब इस पर से आप लोगों को समझ में आएगा कि एन आई अपॉन एन जीरो है, हाँ ये whatever this ni upon n0 is there, this ni upon n0 tells you info which is regarding the delta E. What is mean by delta E? Delta E is nothing but the difference between these two levels. Kb is nothing but the Boltzmann constant, and T is the temperature. So as you observe this criteria at the low temperatures, then you can observe this spectra. But when you have these your all the values, then you have here माइनस ई रेज टू माइनस साइन. मतलब अब क्या होता है, इस पर से हम एक बात या फिर एक टर्म बता सकते हैं. और व्हाट इज दैट टर्म? दैट टर्म इज नथिंग बट एन अपॉन एन जीरो का जो कुछ भी रेशियो या फिर एन अपॉन एन जीरो अगर से इक्वल होंगे तो आपका स्पेक्ट्रा अच्छे से आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से. देन आफ्टर if you have Ni upon N0 spectra or Ni upon N0 values which are less than 1 or which are greater than 1, then how it is helping us for the recording of your spectra. So to explain this criteria, if you have your number of nuclei in the ground level, if they are less than 1, then and then only your spectra could be better, otherwise इट कुड नॉट बी. देखिए अब इसके लिए आप लोगों को अगर से एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है कि आपकी ये जो कुछ भी रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस कैसे होता है, ये रेजोनेंस आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो. ये जो कुछ भी मैंने अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये रेजोनेंस क्राइटेरिया आप लोगों को समझ में आने के लिए आप लोगों को ये इससे पहले का क्लास
अगर से आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज गो बैक and see my recordings of principles of NMR spectroscopy class 1 class 2 both the recordings and orientation वाले भी recording and इससे पहले वाले सारे बेसिक के recordings भी देख लो और इसके आगे जा करके मैं आप लोगों को मेरे नोट्स भी सेंड कर दूंगी। ओके नाउ इसके बाद बात आती है